मुझे अब मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है. So, hello guys, finally we are back. Sorry, आवाज़ फट गई. ठीक है, तो अब आज का प्रोपोगेंडा है हमारा. अगेन आई हैव हाईलाइटेड सम पॉइंट्स जो कि मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ. एंड आफ्टर दैट वी विल स्क्रॉल ट्विटर फीड. If you have any question, we will discuss things. We can talk if anyone is watching. आज मैंने नॉइस सप्रेशन भी लगाया है तो माइक्रोफोन की आवाज़ भी आई होप सही आ रही हो. एक बार मैं चेक कर लूँ क्या वापस से. वेट मिनट. हेलो. हेलो. परफेक्ट. तो फिर आप भी अब सीख लोगे ओबीएस यूज़ करना, तो फिर मेरा क्या काम रहेगा. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. इसको भी मैं थोड़ा स्मॉल साइज का करके पिन कर दूँ. चलो माइक लगा लेता हूँ. मैं भूल गया शॉर्टकट. एक सेकंड रुको, मैं शॉर्टकट ही भूल गया उसका. एंड बुक डिस्कस करी जाएगी, इसके पॉइंट्स वही अब की बार है. चैप्टर दूसरा कल अपन ने डिस्कस किया था. कैट हाउ सुपर इंटेलिजेंस विल बी अचीव्ड अबाउट द पोजीशन रिकैल्सिट्रेंस. वर्ड अब मुझे याद हो गया है. मैं रात को भी याद कर रहा था वर्ड को, पर फाइनली आई फील लाइक अब मुझे याद हो गया है वो वर्ड. रिकैल्सिट्रेंस. विंडोज कंट्रोल टी. एंड इट वर्क्स. इधर कर लेता हूँ सो दैट इट्स नॉट विजिबल टू यू गाइस. एंड आप लोग इसमें से डिस्टरबेंस या एनी काइंड ऑफ इशू नहीं आए. गुड. इसको और छोटा करूँगा मैं. परफेक्टो. लेट्स गो फिर. बुक से शुरू करें या फिर कहाँ से. चलिए. एक्वाई रीडर यूज़ कर रहा था मैं कल तक, बट हैंड्स आउट पैसे मांग रहा था वो मेरे से. एंड एज यू गाइस नो, तब पता चल ही गया होगा, I am in no condition to pay anyone. Of course, I have bought Apple Music, but only service that I pay money for is Apple Music. Other than that, there's nothing that can force me. और Apple Music भी इसलिए क्योंकि मैंने थोड़े महंगे ईयरफोन्स खरीद लिए थे. एंड लॉसलेस सुनने के लिए IEMs खरीदे. एंड अब लॉसलेस सुनना ही पड़ेगा. हेडफोन वो भी है मेरे पास. क्या कहते हैं उसको, एम्पलीफायर एम्प डेक भी है मेरे पास, मिनी टाइप सी वाला. तो जब मैंने वो खरीद लिया तो फिर अब यूज़ तो लेना ही पड़ेगा. थोरियम इज़ नाइस. आई ट्राइड मैनी EPUB रीडर्स. थोरियम इज़ मोस्ट सिमिलर टू एक्वाइल रीडर. ऑफ कोर्स एक्वाइल रीडर इज़ बेस्ट. एंड बहुत सारे लोग कैलिबर यूज़ लेते हैं, बट कैलिबर का वो है कि UI बहुत पुरानी है, हार्ड टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट ईजी. ये चैप्टर था जो कि अपन पढ़ेंगे कल. Cognitive superpowers. I don't know what this chapter is about. चलिए तो फिर.
डिसिसिव स्ट्रेटेजिक एडवांटेज कल अपन ने डिस्कस किया था अबाउट वेज ऑफ सुपर इंटेलिजेंस जिससे अचीव करी जा सकती है, क्या पब्लिक उनको एक्सेप्ट करेगी एंड करंट स्टेज पर वो कहाँ है करंट। ये बुक 2014 में पब्लिश हुई थी बट वी टॉक्ड अबाउट करंट स्टेज। एंड नागल की लाइव स्ट्रीम में आधी लाइव स्ट्रीम का ऑडियो ही नहीं आया क्योंकि वो मैंने ऑडियो मॉनिटर पे मॉनिटर ओनली कर रखा था, आउटपुट बंद हो रखी थी। एंड उसके बाद जब आज मैं उसको एडिट कर रहा था लाइव स्ट्रीम से शॉर्ट्स के लिए, देन आई रियलाइज दैट आई डिड अ बिग मिस्टेक। सो द क्वेश्चन फॉर टुडे इज whether there will be one super intelligent power or many. Of course, everyone is working to reaching super intelligence as they wish, what kind of technology they are investing money in. So क्वेश्चन तो बनता ही है एंड आज वही अपन डिस्कस करेंगे कि सुपर इंटेलिजेंस का एक ही तरीका है क्या फिर या फिर वो खाली आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस से ही होगा, एआई टेक्नोलॉजी, और इन अदर वे लाइक brain emulation or something else that I don't know about but many labs have hidden. एंड एक और चीज़ का इसमें डिस्कशन हुआ है, एक और चीज़ का इस बुक में चैप्टर में डिस्कशन है एंड दैट इज विल गवर्नमेंट अपोज इट हाइड इट, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। सो लेट्स the first sentence is if a project did obtain a decisive strategic advantage, would it use it to suppress competitors and form a singleton. Singleton is like monopoly. ग्लोबल लेवल पे सिर्फ एक ही कंपनी है जो सारे डिसीजंस बनाएगी, सब कुछ कंट्रोल करेगी। एंड दैट इज अ क्वेश्चन टू आंसर अबाउट। So, will the front runner get a decisive strategic advantage? What it means is कोई कंपनी है उसने अपनी टेक्नोलॉजी पहले डेवलप कर ली तो पहले बढ़ जाएगी एंड जो पीछे वाली टेक्नोलॉजीज कंपनीज होंगी वो पीछे रह जाएंगे बिकॉज दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द गैप विल कंटिन्यू टू बिकम वाइड एनफ। अगर वो कंपनी जैसे मेरे पास बहुत भयंकर टेक्नोलॉजी है, दूसरी कंपनी के पास नहीं है, अब मैं तो उस कंपनी को यूज़ लेके एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ जाऊंगा ना, और वो कंपनी तो धीरे धीरे होगी, अब वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी बट आई एम नाउ more faster exponentially growing, so the company B will never catch me in terms of how intelligent their subsystem or any software is. So yes, imitation is it's what talking about same technology जब इस कंपनी के पास पहुंचेगी, इमिटेशन की बात करें तो अगर सेम टेक्नोलॉजी इस कंपनी के पास है और जब इस कंपनी के पास पहुंचेगी तो कंपनी तो पहले ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व में पहुंच जाए स्टार्ट हो जाएगी, और अगर 6 महीने बाद भी पहुंचेगी तो एक द कंपनी बी विल ऑलवेज बी बिहाइंड बट इट विल गेट द स्टेप बेटर फॉर मच cheaper and a developed product. So yes, imitation creates a headwind that disadvantages the leader and benefits laggards, especially if intellectual property is weakly protected. जो कंपनी बी है उसने तो इतना पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया था अपने प्रोजेक्ट में कि वो डे वन पे प्रॉफिट होगी जैसे ही वो प्रोडक्ट आएगा, बट जो कंपनी ए है इट हैज़ इन्वेस्टेड इन दैट रिसर्च विच लेटर इट मेड ओपन सोर्स फॉर कंपनी बी, so it has to gain earn that money also which it invested in doing that research. And there are some examples also in book में जहाँ पे कि एक टेक्नोलॉजी जो किसी एक कम्युनिटी ग्रुप कंट्री के पास है एंड वो जब दूसरे के पास पहुँच रहा है तो उसमें जो टाइम है वो कम होता जा रहा है। स्टार्टिंग विद चाइना, चाइना हैड सिल्क production for over 1000 years and it was a monopoly. सेरिकल्चर चाइना में ही था, वो लोग उन्हें उसको
अगर कोई लीक करता था तो उसको डायरेक्ट बीहेड कर दिया जाता था. दे वर प्रोटेक्टिंग इट वेरी हार्ड. वो नहीं चाहते थे कि वो दूसरी कंट्री में चला जाए, बट ऑफ कोर्स समवन डिड दैट. द रोमन्स, डिस्पाइट द हाई प्राइजेज, उन्होंने सिल्क इंपोर्ट किया इनके एम्पायर में, बट दे नेवर थॉट अबाउट लर्निंग द आर्ट ऑफ मेकिंग सिल्क ऑन देयर ओन. बट लेटर किसी ने जापानीज एक्सपीडिशन मैनेज्ड to capture some silkworm eggs along with 4 young Chinese girls, जिन गर्ल्स ने द टेक्निक टू मेक सिल्क फाइबर उन जापानीज को सिखाया, एंड फ्रॉम दैट इट एक्सप्लोडेड. So it took around 2000 years for a technology to reach from group A to group B back then. But वो टाइम धीरे धीरे कम होता जा रहा है. For example, porcelain making. The craft was practiced in China during Tang Dynasty around AD 600, but Europeans ने इसको 18th century में ही किया. Of course, it's a very long duration, but it's reducing. The human species took tens of thousands of years to spread across most of the globe. The agricultural revolution took thousands of years. Industrial revolution took decades. And currently, the information revolution took days. Something which someone has discovered often leaks and reaches to someone else just within few minutes. And even if it's kept tightly hidden, it leaks anyway in few months or weeks. एन एग्जाम्पल जो इस बुक में दिया हुआ है वो कोई डांस रिवॉल्यूशन है. मैं नहीं जानता क्या है, बट वीडियो गेम है जो कि जापान से यूरोप से नॉर्थ अमेरिका जस्ट 1 ईयर में पहुंच गया. एंड अगर करंटली बात करी जाए तो इफ़ अ न्यू गेम रिलीजेज लाइक दैट GTA 6, it reaches all over the world in just a few minutes. That's how fast and short the duration has become for something to reach from point A to point B. And often these are published in the academic literature and can thus be regarded as universally available. But when a discovery happens that is too advantageous or profitable for someone, publication is delayed for that thing. For example, the Diffie-Hellman key exchange protocol and RSA encryption scheme. चलिए इनके बारे में देखते हैं. What do these things even mean? Diffie-Hellman key. क्या क्या बोल रखा है मैंने? तुरंत 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 तुरंत. The Diffie-Hellman key is a mathematical method for securely stabilizing a shared key between two parties over an insecure communication channel. Just like पिक्चर में करते हैं ना, आधा नोट दे दे के वही चीज़ है, बट नाउ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी आई थिंक इट्स लाइक हाउ व्हाट्सएप यूजेस end-to-end encryption. The encryption key is shared with each other openly, but it needs both of them to decrypt the text messages. पब्लिक की एंड मेरे को पता है पहले मिलिट्री में ही किया होगा सबसे पहले Diffie-Hellman की एक्सचेंज. मिलिट्री में बहुत सारी रिसर्चेज हैं जो पहले वहाँ हो जाती है फिर बहुत टाइम बाद आती है पब्लिकली. Asymmetric public crypto system that uses a pair of multiple one public and to secure it. Unlike Diffie-Hellman, RSA uses different keys for encryption and decryption, with the public encrypting messages that can be only encrypted by the corresponding. कोई भी encrypt कर देगा but हर कोई decrypt नहीं कर सकता. ठीक है ठीक है ठीक है. Encryption to related, and definitely there is a higher chance कि मिलिट्री नहीं किया होगा सबसे पहले.
चेक करते रहना चाहिए खुद को बार बार, बिकॉज दोबारा स्क्रीन भी नहीं है मेरे पास, एंड जो फ़ोन है उससे तो मैं वेब कैम चला रखा हूँ. प्लीज़ actually donate if you can. I need a lot of money to make setup work. If you think I can make something bigger out of it, I have a bigger dream, जिसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, अभी नहीं करनी चाहिए. मेरे दोस्त ने मना किया है कि नज़र लग जाएगी. Talking about these things, DPL Monkey protocol and RS encryption, they were discovered by academic community in 1976 and 78, but they were known by the people before that around 1970s. So of course they didn't release it then. Another thing, some projects will happen to end up with better yeah, of course it's also a thing that cannot be controlled, but still it doesn't happen all the time. Like Meta, Mark Zuckerberg ने around $2-3 billion spend किया talent acquisition में for AI, and of course they have a better talent. So it would be no surprise if in next 1 or 2 years they announce AGI or come with a far better model and become mainstream again, unlike Llama. And it is also highly unlikely that two projects would be close enough to undergo a fast takeoff concurrently for a medium takeoff. It can only happen in a slow takeoff where both have enough time, enough power, enough money. Power means compute power, to develop simultaneously and improve simultaneously. So, and often when something one gains much more success, the attention shifts to that one. All the money, compute power, attention is gained that by one, and it grows much more than the other one, which could be much better than the original but got less attention or money or better minds. So of course that also depends कि हो सकता है कि whole brain emulation is a better tech, people are working, but currently a very large amount of money is on artificial intelligence. So it could be possible that whole brain emulation needs just more money and support and better minds, and it will reach ASI or AGI sooner than AI, but I guess we never know because no one wants to take that risk to invest in multiple projects. Either the all brain emulation succeed, if some सोचो अगर किसी ने पैसे लगा दिए तो या तो होल ब्रेन इम्यूलेशन सक्सेस होगा तो इट विल बी गुड, बट एआई भी सक्सेसफुल होगी क्योंकि वो सब लोगों ने उसमें पैसे लगा रखा है. और अगर किसी ने पैसे लगाए होल ब्रेन इम्यूलेशन में एंड इट फेल्ड, तो वो एआई से भी पीछे रह जाएगा लिस्ट में अभी करंट सिनेरियो में. तो ना तो होल ब्रेन इम्यूलेशन अचीव कर पाया अच्छी तरह से, ना वो AGI ASI अचीव कर पाया अच्छी तरह से. और अगर उसने कर भी लिया होल ब्रेन इम्यूलेशन तो द वर्ल्ड इज़ डेवलपिंग फॉर AI ASGI एंड ASI. कोई कंपनी नहीं है जो इतना उस पर कर रही है इन्वेस्ट, रिसर्च, प्रोडक्ट्स बना रही है जितना AI पे बन रहे हैं. सो द मार्केट इज़ नॉट रेडी फॉर दैट जस्ट yet. It could be ready in next 10 or 20 years, we don't know. How large will the last critical breakthrough idea might come from a single individual or a small group that succeeds in putting everything together. And that's what happened, I believe, is attention all you need research paper in 2018. Of course, AI में research 1950s से चल रही है. People had dreams, imaginations before, centuries before that, and no one was able to make LLMs as we are now. So once things gained some traction, people combined all of the knowledge they had from many years and decades of research, and finally that single paper completely changed the trajectory of AI. And a small company called OpenAI back then
When came into the market, it just flipped everything. The world started to get AI more seriously. I mean, of course, आपने ट्वीट देखा होगा जहाँ पे when on the day one when ChatGPT was launched, no one used it. मैंने भी use नहीं लिया था. Well, I am trying to build a career in that field now. But soon the thing gained traction and it has flipped everything else. All that came from a single company. याद आया तो उसका वैल्यूएशंस देखते हैं. Valuations of open past 10. Of course I will get distracted. और क्या है बताऊँ मैं. 2001 में it was already 2020. Generally approve the company over donation cap profit model to attract commercial investment. For its past 2015 to 2020, OpenAI was a non-profit and only worked on donations it got from everyone, which were also capped. And then in 2021, after GPT-3, it exploded. 14 billion, 30 billion in 2023, and 157 billion in 2024, and 5, and is just going crazy. And they are expected to reach 1 trillion in 2029 or 30, I think. Of course, data is not accurate, it's just in guessed estimate. मॉनिटर भी करना पड़ेगा. Well, another concern with AI is if a powerful state might also attempt to acquire projects located in other countries through espionage, theft, kidnapping, bribery, threats, military conquest, or any other powerful means. And what it means by is how China is trying to sabotage Taiwan, but Taiwan is the chip maker for the entire world. So China is trying very hard because if they gain control over the state of Taiwan, they can control the chip supply of the whole world. A single company named TSMC is the reason behind chips in the whole world. Of course, things are diversifying now, but still, TSMC is a very major player in chips manufacturing. And that's why China is so actively trying to control Taiwan so that it can control the whole world. उसके बाद यूएसए का डोमिनेंस नहीं रहेगा क्योंकि चिप्स तो चाइना ही बनाएगा ना. अगर चाइना ने चिप्स रोक दिया, जीपीयूज रोक दिया, सीपीयूज रोक दिया, तो यूएसए के टैरिफ्स भी कुछ काम नहीं करेंगे. एंड दैट विल हैपन इन एआई ऑल्सो. अगर कोई छोटी कंट्री है जिसके पास काफ़ी अच्छा मॉडल, इवन ए सिंगल साइंटिस्ट, टीम, पर्सन, कंपनी, स्मॉल कंपनी दैट इज़ नॉट लेस पावरफुल, इट हैज़ टू बी एक्वायर्ड बाई लार्जर कंपनी. कोई बड़ी कंपनी उसको धमका के कैसे ना कैसे करके ऑफ कोर्स एक्वायर कर ही लेगी. द केसेस हैवंट कम बट ऑफ कोर्स some of the whistleblowers have come front in these things and the fate was not good for them. So there is a high risk and it might have happened in the past with some company that I don't know now. I'm not interested in taking names, but of course some names are coming from my mind, especially an animal named llama. The major intelligence agencies of the world would start to monitor groups and individuals who seem to be engaged in relevant research. That's what I talked about. इसमें फिर अब उसकी बात हुई है कि हाइड करके उसको सीक्रेट बना के भी कर सकते हैं. नॉट इंटरेस्टेड. Then there's also a thing that what if all the humans in the world come together to make that AI project
to make that AI project successful. ऐसा पहले भी हुआ है जैसे इंटरनेशनल स्पेस ऐसा पहले भी हुआ है जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर 29. However, the major motivation for collaboration in those cases was most cost sharing. There is also a probability that development in AI could be shared with other countries, like OpenAI's Stargate. The OpenAI share data center, also it needs those data centers, so it has to partner with companies in all over the world to make those Stargate data centers, just like how humans have collaborated before from different regions in these cases like International Space Station or Human Genome Project. So that could also be a way that all of the companies, instead of rivaling each other, after some stage come together and develop and benefit each other's models. And a commendable job has been done in that field by Google also, by open sourcing and releasing all of its research papers on AI. Of course, the models are very beneficial commercially and cannot be released. Still, the smaller models are open source for the public, and the research papers and all the research they do is open source. It's just nothing but collaboration among people. The research for attention paper was done by Google, but the first product to come was from OpenAI. So it's just a collaboration. नेक्स्ट इज कुछ नहीं है इसके बाद। ओके तो चैप्टर तो ख़त्म हुआ, कल फिर से पढ़ेंगे चैप्टर को एंड वी विल टॉक अबाउट दैट मोर। अब क्या करें बताओ मेरे को। गेम मैं कल डाउनलोड कर लूँगा, कौन सा गेम खेलना चाहिए मेरे को आइडिया नहीं है। स्टारड्यू वैली या फिर टेरेरिया, माइनक्राफ्ट नहीं चलेगा इसमें। सो ऑफ कोर्स आई नीड मनी टू बी डोनेटेड फॉर दैट, इफ़ यू कैन प्लीज़। शुरू करते हैं तो फिर 2 मिनट्स का ब्रेक का, इस 10 बजे का। 2 मिनट रुक गया, मैं भी पानी पी लूँ। कुछ है क्या यूट्यूब पे भी? ऑल्सो मैंने नेम भी चेंज कर दिया, राज भट्ट लाइव। Can I react to YouTube videos in my YouTube live stream, or will I get a copyright strike? टाइप ही करना पड़ेगा ना। रेडिट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड। रेडिट there is an whole dedicated to artificial intelligence, subreddit कहते हैं ना इसको। वैन को
ट्राई कर देखिए क्या शॉर्ट्स पे मुझे आ जाएगा। Billionaires are building bunkers out of fear of societal collapse. Actually, it's just that they have too much money and where do they spend it? Someone suggests build a bunker which you are never going to use. मैं भी बनाऊंगा बिलियनियर बनने के बाद एक बंकर तो एंड मैं हमेशा इस यूट्यूब पे वीडियोस थोड़ी बनाते रहूँगा. आई हैव अ ड्रीम अबाउट गोइंग बियॉन्ड this. Of course, I will always make videos, but it won't be a primary thing for me after next 3 years, I think. Codex. I haven't used Codex. अरे आज मैंने एंटी ग्रेविटी यूज़ किया था एंड स्नैप तो बनाया पर वो काम नहीं कर रहा अभी सही से. Kling 2.6 just dropped first text to video model with built-in audio and 1080p output. Nice. Border troops. Oh, ये तो देखना पड़ेगा. रुको, अब मामला सीरियस हो गया है. अच्छा वो ब्लैक पिंक का ही है. हाँ उनका है. तो अटैच ही है सारा. चाइना की रोड है सब. अलग ही दुनिया है भाई. पेड़ा भी कोई बैठाइए ये जो हमें देख रहा है ये रोबोट. चाइना वाले ने रोबोट खड़ा कर रखा है हमारे लिए. ये इधर इनके आदमी सच में रोबोट है क्या ये? हैं? ऑफ कोर्स बॉर्डर मैं बोल रहा हूँ ना. बैठाइए आर्मीज पैसे लगाती है इसलिए ताकि वो उसको रोबोट बना पाए. एवरी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट. मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट बिकॉज उस पे बॉर्डर पे आर्मी यूज कर सके. बॉर्डर ट्रूप्स फ्रॉम द एंड ऑफ बॉर्डर नॉट पैड नन ओपन robots is called a camera. Truth has come out guys. It's definitely not a robot. पता नहीं क्या है but robot तो नहीं है. चैट जीपीटी इज डाउन वर्ल्ड. चैट जीपीटी डाउन थी. मैंने यूज़ नहीं किया. आई वॉज आउट. मैं गया हुआ था कहीं बाहर काम से, घर के काम से, तो मैंने यूज़ नहीं की तब तो चैट जीपीटी. सो ऑफ कोर्स इट हैजंट अफेक्टेड मी. What AI tools have quietly become part of your everyday routine? मैं बताऊँ तो AI स्टूडियो आई यूज़ डेली. उसमें मैंने ऐप बना रखा है सबटाइटल जनरेटर जिसको मैं यूज़ देता हूँ. अभी तो फिर भी वो यूट्यूब ने अपने ऐप में ही डाल दिया डायरेक्ट फॉर द ऑडियो एंड वीडियो जनरेशन. नहीं तो मैं पहले वो इमेज जनरेशन भी ऐप बना रखा है. वो प्रॉम्प्ट्स डालता हूँ मैं, फिर उस प्रॉम्प्ट को इन्हेंस करता है एंड देन जनरेट करता है एज आई विश AI स्टूडियो में. And I use ChatGPT daily. Perplexity has replaced Google a lot for me. Perplexity बढ़िया भी लगता है मुझे गूगल से. तो गूगल का AI मोड ठीक है पर इतना अच्छा नहीं है. वो वेल पहले तो मॉडल भी अच्छा नहीं था, कॉन्टेक्स्ट भूल जाता था. अब इम्प्रूव हो गया है बट आई स्टिल यूज Perplexity over Google. Google is only for when I want to open some website. ChatGPT is daily and other than that, no, I don't use any other AI app.
I rotate up free best chat options, but the list changes rapidly each time scammers pull a bet. Never use it. Today this is exactly the same. चेक करना पड़ता है क्योंकि वो ऑडियो सही नहीं है, आप लोग कोई देखने वाला भी नहीं ना जो बता दे कि तुम्हारा कैमरा इधर उधर हो गया है. 10 massive changes you might have missed. New Nano Banana Pro Telegram launches AI computing network. हाँ, चैट जीपीटी में एड्स आ गए हैं इवन पेड सब्सक्राइबर्स को. फ्री वाले में तो भी मुझे तो दिखे नहीं. गो है मेरे पास, इंडिया में जो आया था फ्री वाला. आई डोंट नो अबाउट that, but I think in the USA the chats have started, especially in iOS. Everything comes to iOS first, even if they are updates or they are ads. परप्लेक्सिटी ने फाइनली मेमोरी फीचर भी लॉन्च कर दिया है. अभी तक तो मुझे उसका कुछ दिखा नहीं, मेमोरी भी सेव की नहीं, खोलूँगा भी नहीं मैं आप लोगों के सामने लाइव स्ट्रीम पे, बिकॉज इट कुड हैव समथिंग पर्सनल जो मैं नहीं शेयर करना चाहूँ. OpenAI images v2 near launch. एक्चुअली OpenAI को नया GPT डेफिनेटली लॉन्च करना चाहिए. मैं कल देख भी रहा था. द लेटेस्ट मॉडल GPT Image 1 इज जस्ट 2 बिहाइंड. मतलब गूगल देखो ना, नैनो बनाना प्रो तक चला गया. चैट GPT वहीं की वहीं है अभी भी. कॉस्ट भी उन्होंने रिड्यूस नहीं करी उसकी अभी तक, और ये घूम रहा है अपने आप. उन्होंने उसकी अभी तक कॉस्ट भी रिड्यूस नहीं करी है. और कॉस्ट भी तो रिड्यूस नहीं हुई है उस मॉडल के, अभी भी वो उतने का ही जितना पहले था. जेमिनाई ऑफ कोर्स मैं यूज़ करता हूँ. जेमिनाई का फ्री स्टूडेंट प्लान भी है मेरे पास. प्राइम इंटेलेक्ट लॉन्चेस इंटेलेक्ट 3. रनवे ML का जेन 4.5 आ गया है नाउ, बिल्ट इनटू एक्स कंपोज विंडो. मिस्ट्रल AI यूज़ करी थी मैंने थोड़े टाइम, बट क्लिंग AI लॉन्चेस, क्लिंग 1. टेलीग्राम लॉन्चेस, कोकून. ये पढ़ने वाली बात है. 100% कॉन्फिडेंशियल AI प्रोसेसिंग नाउ लाइव. चैलेंजिंग डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल विद बेटर प्राइवेसी. सब AI में जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि AI में पैसा नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है. इवन Paytm's Vijay Shekhar Sharma said that he is going to make something out of AI in Paytm in the future. Is AI really a bubble? What do I think about it? We are far underestimating things. Actually मैं पढ़ रहा था extremes and lows के बारे में. So past में जब टेक्नोलॉजी आई थी like इलेक्ट्रिसिटी, कार्स, तो वो भी इस तरह से अपोज हुई थी. अदर्स आइदर सम पीपल वर टू ऑप्टिमिस्टिक और सम वर टू पेसिमिस्ट. जब इलेक्ट्रिसिटी आई देन पीपल वर अफ्रेड कि घर में आग लग जाएगी, वायर्स आर बैड एंड मैनी अदर थिंग्स. और सम पीपल वर जस्ट टू ऑप्टिमिस्टिक कि वो वर्ल्ड चेंज कर देगी, वी विल बी लिविंग अ ड्रीम लाइफ. बट what happened was something in between जो किसी ने predict नहीं किया था. Everyone just adapted to it within a few years and it became a norm for everyone, just like it is now. Same thing happened with cars, क्योंकि starting में horses थे और cars horses को डरा दिया करती थी. And in some religious groups it was like going above 50 or 20 at a fast speed is bad for your health and can be considered sin. So things were opposed and some people were again too optimistic that it will change how we travel. Could be other kind of optimism that I don't know because I wasn't in that era. So same thing has happened with AI. Either some people are too pessimist, they don't believe anything will be, all the companies will waste their money, the bubble will burst into nothing. Or some people are too optimistic that it will change world. AGI, ASI, we don't need to work. UABI, universal basic income, universal high income, there will be abundance, robots. Some people are pessimist, and I think something in between that will happen that no one can predict
because the world is full of entropy, randomness. Nothing can be accurately predicted very well. ये बंदा क्या बोलता है, सुन लेते हैं. I kept seeing people say that AI is a bubble or that it's overhyped, but every time I use AI tools, I seriously don't get how people believe that. To me, it feels like AI is already capable of doing a part of many jobs, including some in healthcare, like basic analysis, documentation, nutrition planning, explanations, x-rays, etc. And if it keeps improving even a bit, it seems obvious that a lot of tasks could be automated. एक चीज़ जो AI में मिसिंग है करंटली, ट्रस्ट. डेटा सही से नहीं देती है, एंड आई थिंक कंपनी शुड वर्क ऑन दैट वी बिलीव द AI मॉडल्स रिलायबली. इट ऑफन हैपन्स विद मी कि मुझे वेबसाइट चेक करनी ही पड़ती है ChatGPT से सोर्स मंगवा के, एंड डेटा फिर वो दूसरा निकल ही आता है. मैं कल ही माइक्रोवेव की डायमेंशन चेक कर रहा था मॉडल नंबर बता के, तो उसने दूसरे मॉडल का वो नाम बोल के मुझे डायमेंशन दे दी, और फिर मैंने जब ऑफिशियल यूज़र मैनुअल चेक की तो डायमेंशन से अलग थे. सो ऑफ कोर्स मेरा विश्वास तो 9 बजे ही उठ गया था उस पे से. पर उस पर भी वर्क करना चाहिए कि वो थोड़ी वो बने जिम्मेदार. So I'm confusing why some people are so convinced that it's a bubble. Of course, it's a bubble that will burst, but unlike तो चलिए बात करते हैं. बबल्स क्या होता है? बबल्स क्या होता है? कोई नई टेक्नोलॉजी आती है. नाउ एवरीवन वांट्स टू गेट अ पीस ऑफ दैट पाई. उसमें अगर वो कोई कंपनी लगाएंगे, दे विल गेट मनी इजीली, दे कैन अर्न मनी इजीली, दे कैन बिकम रिच इजीली. सो everyone wants to make a company like that. When dot-com bubble happened, everyone had that kind of tech company, because back then they were raising very high money from investors, because investors also are humans and they want to be big. That's what's happening with AI now also. AI में लोग पैसे लगा रहे हैं and everyone is forming an AI company, whatever it is. So slowly it's forming a bubble, because most of the companies can be engulfed by giants like Google, Microsoft, and some smaller companies will get a chance to become much bigger than they could be in the past. Now, as Bill Gates said, when the bubble will burst, the companies that truly offer productivity and benefits will survive, just like in dot-com bubble. Only Microsoft, Google, and some companies survived. Of course, their valuations dipped, but when they survived those things, now they are $1 trillion companies. So the bubble isn't bad for anyone. It's just make a company. So it's just like currently there's a good time, and when bad times come, prepare your company to survive that period when the bubble will burst. If the time after that your company survives, you have been out of the bubble, and your company could become as big as next Google or Microsoft. So bubbles are not bad, it's just higher expectance and then higher urge to risk their money, and investors think that they have a chance to earn more money than they can. The bubble is, I think, definitely there. It will burst. Every company will be affected, and a few will survive that. Some like I will build. It is both insanely overhyped and underestimated. A short form for bubble. If anything has a bubble, this is what is the definition of a bubble. It's both insanely overhyped and underestimated. This is what forms a bubble. In
anything, AI bubble, tech bubble, .com bubble, everything was because of these two reasons. इससे अच्छा नहीं हो सकता था डेफिनेशन ऑफ ए बबल. एक घंटा तो मैं क्रॉस करके जाऊंगा 10:30 तक का. AI that runs entirely on your Mac. ओह प्रमोट, सॉरी ऐड पढ़ दिया मैंने तो, कोई प्रमोट हो गया भी मतलब ही. पैसे तो दिए नहीं. Employees are different routers. Open CEO Sam Altman told employees he was declaring a code red to improve ChatGPT and is planning to delay. ChatGPT is behind क्योंकि new company है. Google was investing in AI since 2012 and before that. It's just that they had not guts to launch the AI model first and go wrong. Because of course you remember that initially जब AI models आए थे they were saying anything. They were giving suicidal thoughts, depressing and everything. So of course things were bad और एक बड़ी कंपनी का नाम उसमें पहले आ जाता है तो ऑफ कोर्स उनके स्टॉक्स में काफ़ी लॉस चला जाता. सो दे कुड नॉट. बट वो जब चैट जीपीटी आई तो उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली एंड दे फाइनली रिलीज्ड बार्ड which was very bad, received its opposition, but now they have cooked with Gemini. So of course they had things. फिर से घूम गया ना. अभी मैं लाइव स्ट्रीम देखूँ उसका टाइम लैप्स आएगा ऐसे फिर से कैमरे का घूमते हुए. नैनो बनाना प्रो इज ईटिंग लाइव चैट जीपीटी. वही बात माना बुलाना कि चैट जीपीटी ने काफ़ी टाइम से नया इमेज मॉडल लॉन्च नहीं किया है, ना कि उस ना ही पुराने मॉडल की कॉस्ट सिमिलर बैटरी है जबकि उसकी इमेज जनरेशन कैपेबिलिटीज़ भी है. नैनो बनाना की जो है ना इमेज ये कॉस्ट सिमिलर है जेमिनाई 3 से. अब जेमिनाई 3 महंगा है या नैनो बनाना प्रो सस्ता है, आई डोंट नो. आई कैन फाइंड आउट बट आई वोंट. सुंदर पिचाई गूगल टू स्टार्ट बिल्डिंग डेटा सेंटर्स इन स्पेस. हाँ वो चल रहा है. एलोन मस्क भी बोल रहा था कि स्पेस में सैटेलाइट्स लगाएंगे जिससे कि सोलर पैनल्स लगेंगे जिससे कि वी विल रीच कार्दाशिव 1 एंड फिर गूगल भी डेटा सेंटर स्पेस में ले जाएगा. कूलिंग का कैसे हैंडल करेंगे, बस वो ये कि इफ सैटेलाइट्स वहाँ पे स्पेस में गई डेटा स्टेशन गया तो हाउ विल दे रिलीज हीट आउटसाइड. क्योंकि यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर है, एयर पार्टिकल्स हैं जो इंटरेक्ट करते हैं फैंस से और हीट को कैरी कर ले जाते हैं. बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे वैक्यूम है, हवा नहीं है. और अगर वो हीट को किसी पार्टिकल के बाइंड करके रिलीज भी करेंगे तो ग्रेविटी उसको वापस से अपनी तरफ ही खींचेगी. द टू थिंग्स विल अट्रैक्ट ईच अदर. या फिर ऐसा है कि अर्थ की लोअर ऑर्बिट में करें जिससे वो जो स्टफ है हीट वाला वो एटमॉस्फेयर में आ जाए, अर्थ की ग्रेविटी और उसे अट्रैक्ट कर ले और फिर वो बर्न हो जाए, ख़त्म, खल्लास. I don't know how it works. If you wanna know, I will make a video. Tell me about that. And we have discussed things. Shorts में कुछ है. Zarna Garg, she's just too good. मैंने पॉडकास्ट भी देखी उसकी फैमिली की उनकी. I liked it. कल फिर पिछले 24 आवर्स में जो भी हुआ होगा उसको डिस्कस करेंगे. कितने मिनट हो गए इसको? For night. प्रोसेस में देखना पड़ेगा ना, कुछ तो चल ही रहा होगा ना. Gemini generate 2K for use Nano Banana Pro. Pro tip: make sure to click download on your email instead of copy to get the full resolution. Wow. Photography is also going away now.
सीधा बैठना चाहिए मुझे। मैं वैसे ज़्यादा कंफर्टेबल था। सीधा ही बैठूंगा आपको, इसको पास में लाके ऐसे ऐसे। Elon and Jerry just drove the red bull on Twitter went insane. Andres hasn't want to jinx it. Divorce rates. क्या यार है? Maybe this is my showing my age, but how is like a not my camera called a G6 yet? Like a G6, that would be sick. Of course. No reference जो मेरे इसमें समझ में आ रहा है. Wi-Fi 8 doesn't increase top its screen. It came the same peak specs as the main difference is the focus, higher battery stability and more consistent performance. Wi-Fi improves of your home. Wi-Fi 8. Wi-Fi 8 doesn't increase top speed. It keeps the same peak specs as Wi-Fi 7. The main difference is focus. For Wi-Fi 7 it was higher speed. For Wi-Fi 8 it's better stability and more consistent performance. Wi-Fi 8 improves DRU, helps far away or low power devices send clearer signals, better signal at edges of your home like garage, balcony, outdoors. UEQM, one weak device won't slow down the whole network, smoother speed drops, fewer sudden interruptions. Router divides channel space more efficiently, uses cleaner parts of the channel when main one is crowded. Mesh router interfere less, steadier connection while moving around. Older devices still connect normally, but only Wi-Fi 8 devices get the new improvements. TP-Link made their first Wi-Fi 8 connection in October 2025. Final standard expected around 27-28 with consumer devices likely from 2028 onward. अब मैं इसको क्लिप करके शॉर्ट्स में डाल दूंगा. EVs भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगती हैं. मतलब for performance car of course I would want a nice engine, but they are just comfortable. कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं. स्कूटर है मेरे पास EV के नाम पे, पर फिर भी आवाज़ भी नहीं करते हैं, वाइब्रेशंस भी नहीं करते हैं. पेट्रोल स्टेशन पे किसी आदमी से बात भी नहीं करना पड़ता. घर पे चार्ज करो, मजे करो, बस. चलिए guys, that was it for today. We will meet again some day tomorrow. I don't know when क्या, मैं 9-9:30 से करूँगा स्ट्रीम around 9:30 and that's it for today. बाय बाय. कैमरा फिर से घूम गया है मेरा. बाय बाय.